Good morning, dear student, class 10. Today I am going to start your chapter 3 and topic is disadvantage of DBMS. In previous classes, we are discussing about advantage and usage of databases, need for database, what is a database, and many more topics. Now we will learn some disadvantage of your database. Database has some many more advantages, and nowadays it is very essential for all the business organization database, and business organization must have to use database to manage and store large amount of data, and further they are used to updating and performing our business on the database. Now we will discuss about some disadvantages of database, DBMS, database management system. Besides the advantage of DBMS, there are some disadvantages too, and some disadvantage of DBMS are as follow. There is complexity. Complexity is a big problem with the database, and database is a very complex to store and manage data, and sometimes it is being difficult. DBMS is a complex software and the end user must be aware of the complex complete functionality of DBMS to use the proper database को use करने के लिए first we have to know more knowledge about database, how it is used and how it will be work. This is the complexity of your database. The problem bad design decision may be in trend when there may be flow of the understanding of DBMS, यानी कि कभी पूरा नॉलेज नहीं होने से हम लोगों के डेटाबेस के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं. दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर डेटाबेस. साइज इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द डेटाबेस, एंड डेटाबेस साइज इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा साइज, and it is used to large storage device to capture your data in a database. The DBMS is a large software that occupies large amount of space. बहुत सारा space ये consume करता है on the disk. To work efficiently, it is need large amount of memory. Database पे work करने के लिए organization को बहुत सारा space की जरूरत होती है, and that are managed by that organization. And third is a slow performance. Sometime due to burden of the data, due to large amount of data, your system is processed slow and it will be delay to creating your reports. बहुत सारा स्पेस, बहुत सारे डेटा होने के वजह से इसमें कभी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है. इट विल बी टेक टाइम टू जनरेट योर रिपोर्ट्स. DBMS structure less performance and a traditional file processing system, as the traditional file processing system is written for a specific purpose, while DBMS is written a general purpose. And cost is a major disadvantage of the DBMS. It is costly for an organization and have to manage many of the tools. The cost of DBMS is more than traditional file. जैसे मैनुअल फाइल के अलावा हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटराइज सिस्टम में हम लोगों को कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं, बट ये ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है. प्रोसेसिंग फाइल. द कॉस्ट ऑफ DBMS यूजुअली डिपेंड ऑफ द फंक्शनलिटी ऑफर्ड बाय द DBMS. जैसा DBMS हम लोग यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कॉस्ट अफोर्ड करना होता है. Now we will learn exploring the different type of database. Type of database. Types of DBMS. Database. There are different type of database, and you know database is a collection of related data about a single entity or an object. A database whose entities imply containing information about the employees or a particular organization, such as employee's name, employee address, salary,
depending on the pattern in which the data is stored. Databases are classified into following three types: flat file database, relational database, and distributed database. There are three types of database category, and in the flat file database देखेंगे हम लोग फ्लैट फाइल डेटाबेस आर यूज टू सिंगल सीट एंड दैट आर यूज टू स्टोर इन सिंगल सीट ऑफ योर डेटा. एक ही सीट में हम लोग बहुत सारे डेटा स्टोर करते हैं. फ्लैट फाइल डेटाबेस, फ्लैट फाइल डेटाबेस, फ्लैट फाइल डेटाबेस आर एग्जांपल ऑफ एन स्प्रेडशीट, एक्सेल सीट. जैसे एक्सेल में हम लोग देखते हैं सीट 1 2 3 सीट्स होते हैं, एंड सीट इज ए विजुअल ऑफ द यूजर ऑन द फ्रंट. हम लोगों को फ्रंट पे सीट दिखता है, सीट के सारे कॉन्टेंट्स हम लोग देख सकते हैं. एंड ऑल द डेटा आर यूज टू स्टोर इन ए सिंगल सीट. बहुत बड़ा सीट है और सीट में हम लोग अपने डेटा स्टोर करते जाते हैं. फ्लैट फाइल डेटाबेस रिफर टू ए टाइप ऑफ डेटाबेस in which a single table or file store all the data. For example, an employee database is organization. The most common example of this database is a spreadsheet. A flat file database is shown in the table in your book. Next we will discuss about relational database. Relational database are used to store data in form of table. different डेटाज को डिफरेंट टेबल में डेटा स्टोर करता है रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस आर यूज टू स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल. रिफर टू ए डेटाबेस विच डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल टेबल. दिस टेबल आर लिंक टू वन अनदर. ये टेबल एक दूसरे से लिंक रहते हैं, जुड़े रहते हैं थ्रू द कॉमन फील्ड. अ रिलेशनल डेटाबेस इज शोन हियर. यू कैन सी डेटाबेस दैट कंटेन सेवरल टेबल लिंक टू ईच अदर थ्रू द कॉमन फील्ड. कॉमन फील्ड के थ्रू वो सभी टेबल एक दूसरे से एज ए रिलेशन जुड़े होते हैं. एंड डेटा आर नॉट विजुअल एट वंस. एक ही बार में डेटा नहीं दिखता है. And whatever we have to need, we can open according to ourselves. Distributed database, distributed database. Distributed database is a type of database and that are used to store data in a central location. एक सेंट्रल लोकेशन पे डेटा स्टोर होता है and there are many users and are used to access that data at a single point. Distributed database refer to a central database that is distributed at multiple locations within a network. It allows the user to access database without being interfered with each other. However, the central DBMS synchronizes the scattered database regularly, so all the database supports data consistency. A distributed database system is shown in your field. Okay student, just we are discussing about some type of database, and after that we will discuss about a database that is called a Open Office base. In this book there is a discussing about a software that is a Open Office base is a database. Open Office base also known as a base or OO base. Open Office base is a database application in Open Office suite. Base is popular relational database management system. ये पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. RDBMS इसको हम लोग बोलते हैं. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम where data is stored in a multiple table. Multiple tables में data are used to store and table are related to each other through a common field. Common field के through tables are related to each other. File is stored with the .odb Open Office database extension. The .odb
implies open document database. The base database file contains data in four objects, namely table, query, form, and report. There are four type of documents we are used to store, like टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं. समटाइम वी आर यूज टू मेक अ क्वेरी ऑन डेटाबेस एंड समटाइम मेकिंग फॉर्म एंड रिपोर्ट्स ऑन डेटाबेस, which are will be discussed in the following section. Now we will discuss in next classes, and this is end of your this session. Thanks all of you.